Today we will explore another technique that is known as successive over relaxation method. And short we write it as SOR. S for successive, O for over, R for relaxation method. So this is just a modification of Gauss Seidel to get faster conversions. So in this technique, we write iterative scheme as, तो मैं ith इक्वेशन लिख रहा हूँ. So you write ith xi k plus 1. I'm writing it as xi k plus 1 minus xi previous iterate. ओके माइनस किया तो इसको हम प्लस कर देते हैं xi k. So you can say this is the value of xi at next iterate and previous iterate. So this is the error. तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई दिस एरर विद ए नंबर ओमेगा, एंड दिस नंबर ओमेगा इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पैरामीटर. And usually this number is from 0 to 2. Okay, so error, and then we modify the method so that you can get faster conversions. तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ इटरेट को. So I can rewrite it xi k plus 1. So you can collect xi k these two terms together. So 1 minus omega xi k, then omega times xi k plus 1. Okay. अब xi k plus 1 तो आपने नेक्स्ट ट्रेड पे सोल्यूशन निकालना है. ये राइट यहाँ भी यूज हो रहा है, दोनों साइड है ना. तो जो राइट हैंड साइड में xi k plus 1 है, वी अप्रोक्सीमेट xi k plus 1 on right hand side with Gauss Seidel. Although this method has a theory that you multiply with omega and then you pick the omega, there are many theorems which says that you can pick omega so that your method is faster than Gauss Seidel. But we are not going on those technical details. So I'm writing it right hand side. I'm approximating with Gauss Seidel. तो गॉस सीडल में जो ith इक्वेशन है उसको लिख रहा हूं मैं. हमने पहले भी लिखा था. सो ith इक्वेशन क्या होगी, बी आई माइनस 1 सम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू डायगोनल. सो j इक्वल्स टू 1 टू i माइनस 1. डायगोनल से पहले ए आई जे एक्स जे एट k प्लस 1 स्टेज, और फिर आई डायगोनल से अगले वाले एलिमेंट, दे विल बी ओल्ड. सो आई एम राइटिंग देन के, और इधर ले जाके आप ए आई आई से डिवाइड करोगे. एंड दिस इज कॉल्ड एसओआर मेथड. ओके, सो राइट एक्स आई के प्लस 1 एक्स आई के प्लस ओमेगा टाइम्स एरर, एंड देन यू पिक ओमेगा. And theory says that if you pick omega greater than 1 up to 2, or you can say, you can write precisely, so 1 to 2, then these techniques are called over relaxation techniques. Over relaxation. And you can check from this formula, if omega equals to 1,
then this term will vanish, omega equal to 1. So this is usual Gauss Seidel. Okay, so we have usual Gauss Seidel. And if you pick omega less than 1, and these techniques are also well known, they are called under relaxation. And omega is called relaxation parameter. So in summary, in SOR method, we pick a number from 1 to 2 and you fit that number here, or you can say here. You pick a number like 1.3, 1.5, you fit a number here. So write that iteration by Gauss Seidel, then multiply by with omega, then add 1 minus omega previous iterate xik, and here k is an iteration count, so this is 0, 1, 2, 3, etc. So the choice of relaxation parameter omega usually depends on matrix A, and picking of omega is not an easy task, but there is a theorem which tells us that if your matrix is symmetric and positive definite, then SOR method converges for any choice of initial guess. So I am just going to state that result, then we will try to solve one example with this technique. And of course, you can compare SOR with Gauss Seidel in lab. Maybe when you are doing the problem with Gauss Seidel, you have to perform like 8, 9 iteration. But if you pick omega correctly, then you may get your answer in 3, 4 iterations. But you have to pick omega carefully. But in this undergraduate graduation course, so usually you can say omega is given. So I'm going to state that result, which says that if everything is fine, you can apply SOR with any initial guess. So this theorem is that if A, coefficient matrix A, is symmetric and it is positive definite, I'm going to define this concept right now after this theorem. Symmetric and positive definite matrix, then successive over relaxation method converges for any initial guess. And you know what are symmetric matrices. So in continuation, if a matrix A, if any matrix A is symmetric, then it is positive definite if and only if all of its principal minors has a positive determinants. So this means if you have a symmetric matrix, so symmetric means A equals to A transpose. So you interchange row and columns. If matrix remain unchanged, you say matrix is symmetric. And if matrix is symmetric, then what is positive definiteness? This means that मान लो आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है. अब लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हम किसको बोलते हैं? इसको फर्स्ट, इस एंट्री को. ये पॉजिटिव होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स A11 must be positive, first leading.
फिर यहाँ से शुरू करना है, मान लो 3x3 है, फिर आप ये एंट्री 2x2 का लो, यानी कि 1x1 का, यानी कि फर्स्ट एंट्री होगा, इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मींस एंट्री मस्ट बी पॉजिटिव। फिर आपने 2x2 लेना है, उसका डिटर्मिनेंट यानी कि A11 A12 A21 22 ये पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर 3x3 यानी पूरा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव डेफिनेट का मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल माइनर, मतलब आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से स्टार्ट हियर, दिस फर्स्ट एंट्री मस्ट बी पॉजिटिव, देन टेक 2x2, उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो, देन 3x3 मीन्स फुल मैट्रिक्स, अगर 3x3 है तो if everything is positive, you say that this matrix is positive definite. And if matrix is symmetric and positive definite, and you apply SOR method, you get convergence. Okay, so now I'm going to solve one example. This example says that you have a 3x3 system. Consider this system. So, or you can write equations if you want. So 3x1 minus x2 plus x3 equals to -1. Second equation, minus x1 plus 3x2 minus x3 equals to 7. Third equation, x1 minus x2 plus 3x3 equals to -7. So consider this system. Apply SOR method. With omega, that is a given number 1.25. Okay. So firstly, I am verifying that condition. So firstly, we write coefficient matrix. I'm showing it that it is symmetric. So coefficient matrix is 3 minus 1 1 minus 1 3 minus 1 1 minus 1 3. This is A. So in order to check symmetric, we find A transpose. So what is A transpose? First row को first column बना दो, second row को second column, third row को third column. So you can check A transpose equal to A. So A is symmetric. Now we check positive definite. So what is positive definite? You start from first entry A11. Okay. अब one cross one का determinant मतलब first entry A11 which is 3, so this is positive. Then start from this leading 3, take 2 cross 2, this one 3 minus 1 minus 1 3. Okay, this one 2 cross 2. Check this one. So determinant 3 minus 1 minus 1 3. You can check it is 8, which is positive. Then 3 cross 3 यानी कि full matrix, and take its determinant, and you can expand it. This is 20, which is positive. So everything is positive. So you can say that this matrix has principal minors which has positive determinants. Okay. So therefore, matrix A is positive definite. Since A is symmetric and positive definite, so SOR method will converge
for any initial guess. So you can start with any point, method will converse. Okay, so this is the theoretical stuff. So now I'm solving the problem, and in exam you just need to solve the problem. So let us start with initial guess. X0 equals to 0, 0, 0, and it is given that omega is 1.25. So first write its fixed point form. Solve first equation for x1. Take everything on right hand side. Solve second equation for x2. 7 plus x1 plus x3. This is called fixed point form. Okay. Then solve third equation for x3. That you have done earlier for Gauss-Seidel and Jacobi method. Okay. So now I'm writing SOR iterations. So what we do in SOR, so we just label x1 k plus 1. राइट हैंड साइड को आपने क्या करना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना, ओमेगा, एंड इट इज गिवन दैट ओमेगा इज माइनस 1.25, और इसमें ऐड करना है फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस ओमेगा x1, एंड सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन you just add 1 minus omega x2, then omega by 3 Gauss-Seidel. So 7 plus x1 plus x3, and also put a label. So this you put k label, and in x1 you use new value and x3 old. Similarly, third equation 1 minus omega x3 plus omega by 3, then minus 7 minus x1 plus x2, both are new, k plus 1, and k 0, 1, 2 iteration count. Okay, so just Gauss-Seidel plus omega ये ऐड किया हमने, ये तो Gauss-Seidel है, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई किया Gauss-Seidel को, और उसमें फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस ओमेगा x1 ऐड किया, सेकंड में 1 माइनस ओमेगा x2, एंड सो ऑन. So let us start with 0, 0. Then first iteration, so x1 1. So this is 1 minus omega will come in each term, so just simplify it. Omega is 1.25, so 1 minus omega will be minus, this is minus 0.25. एक बार सिंप्लीफाई कर लो इसको. लास्ट स्टेप में क्या किया था? ये वाला, ये मैंने लिखा ना, ith इटरेट को हम ये लिखते हैं ना, Gauss-Seidel को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और उसमें ये ऐड कर दिया, तो ये किया फर्स्ट, ये Gauss-Seidel टेक्निक लिख लो, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशंस को राइट हैंड साइड में, और फर्स्ट में 1 माइनस ओमेगा x1 ऐड कर दो, सेकंड में 1 माइनस ओमेगा x2, थर्ड में 1 माइनस ओमेगा x3. जनरल में हमने क्या करना है, xi में 1 माइनस ओमेगा xi ऐड कर देना, ठीक है. अब फर्स्ट टर्म को मैंने ये 1 माइनस ओमेगा तो कांस्टेंट है, हर एक में आना है ना, तो 1 माइनस 1.25, सो दिस विल बी माइनस 0.25. तो एक बार सिंप्लीफाई कर लो टू सेव योर टाइम, and x1 old is 0, and omega is 1.25 divided by 3, then minus 1, x2 x3 दोनों 0, so simplify it, this is the minus 0.41667. then second, x2 1, second equation
minus 0.25 multiplied by 0, 1.25 omega by 3, 7 minus x1, so x1 is new one, 7 plus था तो ये minus already है, 0.41667, x3 is 0, so this is 2.7431. Similarly, from third equation, minus 0.25 times 0 plus 1.25 by 3, minus 7 minus x1, so minus minus plus x1, this one, first one, and plus x2, x2 is 2.7431, this one. So this is minus 1.6001. So this completes first iteration, and you can write in short, first component is minus 0.41667, second component, and then third component, x3. So this is my first answer. Now repeat the procedure, second iteration. So I am showing here 2 iterations, then you can go in, you can proceed in the same manner. Second iteration, so x1, 2. So minus 0.1 minus, x1 कौन सा यूज करोगे, दिस वन, ओल्ड वाला यूज करना ना यहाँ, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा बाई 3, 1.25 by 3, then minus 1 plus x2, 2.7431, minus x3, minus minus plus, and this comes out 1.4972. Then second component, x2, minus 0.25 times x2, this one, 2.7431, plus omega by 3, second iteration, 7 plus x1, so x1 is 1.4972, plus x3, old one, this one, so minus, plus x3 था तो minus x3 already. So simplify with calculator, this is 2.1880. Similarly, third component, x3, minus 0.25 multiplied by old x3, old minus 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 plus 1.6001, plus 1.25 by 3, minus 7 minus x1, this one x new one. ये ओल्ड नहीं यूज करना, साथ इसके साथ के साथ करना है ना गॉस साइडल में, और x2 या ऊपर वाला 2.1880. So this comes out minus 2.2288. And in short, you can write it. Second iteration का जो आंसर है, फर्स्ट कंपोनेंट 1.4972, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट minus 2.2288. Okay, and you can fit any stopping criteria that we have used earlier in Gauss-Seidel. Everything is same. बाकी तो iterate करना है same manner में. And if you want to write one more answer, so I'm writing final third answer, third iteration. So third answer is, first component है 1.0494, second component is 1.8782, third is minus 2.0141. अब बार बार करोगे तो क्लियर हो रहा पैटर्न, ये फर्स्ट कंपोनेंट 1 बन जाएगा, सेकंड 2 और थर्ड -2. सो दिस इज माय आंसर सॉल्यूशन. एक दो बार और करोगे तो सो यू विल गेट दिस आंसर. Okay, so in that way you can use SOR method in the same fashion as we have used earlier techniques, Gauss-Seidel, Jacobi, etc. Any doubt in this?
Okay, so let's now discuss briefly errors. So next heading is error bounds. So in this topic, my aim is to find relative error. अब एरर का मीनिंग क्या है? एक्स ट्रू वैल्यू है, एक्स स्टार अप्रोक्सीमेट है, तो एरर हम किस में कंप्यूट करेंगे? नॉर्म में, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू. सो एरर बाउंड मीन्स find its maximum value. Okay, so maximum of this, and that will be known as error bound. So to define error bound, firstly I'm going to define what is called residual vector, or simply residual vector. So usually we are solving a system, and what is error? Let us say x is true solution, x star is approximate, so this is my error. But usually we are dealing system, so I'm writing ax. So in other words, this is called error. But if you multiply error with matrix, and can you say that if error is small, so this difference is also small or not? And this difference a, error को अगर आप a से multiply करते हो, ax minus ax star, this is called residual. So what is residual vector? Let x star be an approximate solution of system ax equals to b. तो x true हो गया यहाँ पे automatically. Then residual vector, or residual, simply residual, is defined as, it is denoted with r. So this is ax minus ax star, or you can say a multiply with error. ये भी लिख सकते हो आप उसको. Just write it clearly. Or since ax equal to b, so I can write is b minus ax star. ओके, तो रेजिड्यूल क्या है? एरर को आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूल वेक्टर. So if A is a 3x3 matrix, X is a column vector, so residual will be also a column vector. तो compute कैसे करना है? So it is easy to compute it by definition. For example, the linear system let us say this system is 2 cross 2, so 1.301, so 2 and this is 2. So I have a 2 cross 2 system. So this system has solution 1 1. You can say solution x equal to 1 1. This is true solution. आगे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिडुअल वेक्टर फॉर अप्रोक्सीमेशन x star, which is 3 minus 0.001301. Okay, so you can verify this as a true solution if you solve with this problem in MATLAB by taking long format. You will get solution 1 1. But if you use less digit or you apply some restriction, you will get this answer 3 minus 0. And you can compare both. So this is totally different.
x1 1, x1 3. So there is lot of deviation. x2 1 and x2 is minus 0.0001. So you can say this is a poor approximation. And we want to find residual, and then we will see that this residual will affect the relative error. So how to solve this problem? So firstly, just go with definition. So what is residual vector? This is ax minus ax star, or you can say b minus ax star. तो b दे रखा है उसमें राइट हैंड साइड है 33.301 माइनस a coefficient matrix, okay, x star approximate solution, so which is 3 minus 0.301. So just multiply it, a को x star से मल्टीप्लाई कर लो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दो, करना मल्टीप्लाई इसको 2988 29998 एंड दिस इज 3.301, सब्ट्रैक्ट कर दो 0.3020, okay. And if you take norm of this residual, norm means pick the largest component, so this is 0.302. So now I'm going to add one new query in the question, that will small residual implies small error, okay. So now you can see residual is small. अब वेक्टर को कैसे देखना है, आपने नॉर्म ले लेना है उसका ना, सबसे बड़ा पिक कर लो, सबसे बड़ा बहुत छोटा है ना, सो यू कैन से दिस रेसिडुअल इज स्मॉल. सो अगला मेरा क्वेश्चन है, ओके दिस इज स्मॉल, बट कैन यू से दैट एरर इज स्मॉल? सो नाउ वी कैलकुलेट द एरर. तो एरर कैसे निकालोगे? सो व्हाट इज एरर? सो आई एम टॉकिंग एब्सोल्यूट एरर, सो और यू कैन से एब्सोल्यूट एरर. So this is x minus x star, or calculate, okay, firstly write error. So this is x minus x star. So what is x? 1 1. And what is x star? This is 3 minus 0.00301. So you can calculate their difference. So what will be the norm of this error? अब इसमें सबसे बड़ा पिक करो, that is 2, and you can now make comparison. Can you say that residual r which is small implies small error? So this is important point. Can you say small r? अब देखो उस सेंस में देखो एरर तो यही था ना, एरर अगर ये स्मॉल है तो आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, दिस इज रेसिडुअल. सो माय क्वेश्चन इज, इफ r इज स्मॉल, कैन यू से दैट रेसिडुअल इज स्मॉल? बट यहाँ पे तो नहीं है ना. देखो आप एरर इज बिगर, 2 तो बिग है ना काफी, बट 0.002 इज स्मॉल. सो व्हाट कमेंट आई मेक हियर? Residual is small, but error is bigger. So small residual does not imply small error. Okay? Any doubt in this?
So now finally we are going to find relative error bound. This is an important theorem and we will also prove it. And this theorem has a small proof and you can say this is error bound. So what we try to find in this theorem, let x star be an approximate solution of system Ax equals to B, where A is a non-singular matrix. Non-singular means determinant of A is non-zero, so inverse is possible. In other words, you can find inverse of matrix A, and you know that inverse of every matrix is not possible. If determinant is zero, so you cannot find inverse. So A is non-singular and R is the residual. So R is a residual vector. Then for X non-zero and B non-zero, we have so, so this is absolute error bounded by norm R multiplied by norm of A inverse, and this is bound of relative error. So, norm of A multiplied by norm of A inverse, norm of R divided by norm of B. You have to memorize this formula to solve the questions, and also you will study the proof of this theorem. Proof is very small. So first formula, this is the maximum absolute error, and second formula, this is for maximum relative error, and you are dividing with B. So it is, so B is non-zero. So if B is non-zero, so norm of B will be non-zero. Also you are dividing with X here, so X is also non-zero. So in other words, its norm is non-zero. And also we have A inverse here, so A is invertible since A is a non-singular matrix. So proof is very short. Just we start calculating residual and then we will write it. So what is residual? Ax minus Ax star here definition. Or you can write it A x minus x star. Okay. So solve for x. अपने error निकालना. So find x minus x star. So you should get rid from A here. So pre-multiply A inverse on both sides. Okay. A inverse R दोनों side multiply कर दो. A inverse A, that will be identity. अब क्यों कर सकते हैं? Since A is non-singular. So A inverse is possible. तो यहाँ से अब मैं राइट को लेफ्ट में लिख रहा हूँ. A x minus x star equals to A inverse R. ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना 1. तो फर्स्ट में यही आपने निकालना है. टेक नॉर्म ऑन बोथ साइड्स. नॉर्म ऑफ A इनवर्स R. अब हमने मैट्रिक्स नॉर्म में प्रॉपर्टी लिखा था. 3 प्रॉपर्टी वी हैव रिटन दैट नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन यू कैन राइट दैट नंबर आउटसाइड. एंड थर्ड प्रॉपर्टी वाज actually triangle inequality in plus, and matrix norm also satisfy triangle inequality in product. ये भी उसमें वैलिड है. नॉर्म ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी. इसको यूज कर लो. यहाँ से ये आ गया नॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ आर, एंड दिस इज प्रिसाइसली द बाउंड फर्स्ट.
नॉर्म तो नंबर है ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी को पहले लिखो आप। व्हेन यू पुट नॉर्म, दिस इज ए नंबर, जस्ट ए नंबर। और नंबर में आप लिख सकते हो ना, चाहे आप 5 क्रॉस 4 लिखो, चाहे 4 क्रॉस 5, सो दे आर कम्यूटेटिव। बट हाँ, in matrix you cannot write always that a b equal to b a. Okay, so this is the absolute error bound. So you can write absolute error bound. अब सेकंड निकालना है तो नॉर्म एक्स से डिवाइड कर दो जस्ट। ओके, अब नॉर्म एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ए एक्स इक्वल टू बी से। सो आल्सो वी हैव ए एक्स इक्वल्स टू बी, चाहे आप ये लिखो चाहे आप उल्टा लिखो, सो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, बी इक्वल टू ए एक्स भी लिख सकते हो। टेक नॉर्म ऑन बोथ साइड। अब इसमें भी वो इक्वलिटी यूज कर दो, नॉर्म ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी। अब एक्स को लेफ्ट में ले आओ, नॉन जीरो है ये, इसको राइट में ले जाओ। सिंस x non-zero है and b is also non-zero, so this is say 2, say this is 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, सो इसमें ये था 1 में ये था लेस देन और इक्वल्स टू, और इसमें लेफ्ट में है नॉर्म एक्स है, तो यहाँ पे नॉर्म सेकंड से नॉर्म ए, फर्स्ट से नॉर्म ए इनवर्स, फर्स्ट से नॉर्म आर, सेकंड से नॉर्म ऑफ पी। सो यू कैन राइट पुट ए लाइन हियर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड माय रिलेटिव एरर बाउंड। सो दिस इज relative error bound. This completes the proof of the theorem. Okay, easy है। Just go with residual. First write residual, which is ax minus ax star. From this find x minus x star, and from ax equal to b you find 1 by norm x. Okay, any doubt? I'll stop now. If you see this bound clearly, so in right hand side there is a number norm a inverse, and this quantity only depends on matrix A, not on x, not on b, not on x star. So this number is only depend on matrix, and this is called condition number of matrix. And you can check if this number is bigger, error will be bigger, and if this number is small, error will be small. More formally we define condition number in next class. Any doubt in this? Okay, so we will continue tomorrow.